Welcome back in my channel Creative Khushi Uma. Today's topic is Laplace transform. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी एंड हम प्रॉपर्टी देख रहे थे. उसमें से 2 प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है. नाउ अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इन दिस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मीन्स इन time domain it is signal is multiplied with exponential, and in frequency domain it is shifted. The frequency shifting property is L means Laplace transform of e raised to s naught t into x of t equal to capital X of s minus s naught. Proof: we know that the Laplace transform definition x of t equal to integration minus infinity to infinity x of t e raised to minus s t dt. e raised to s naught t x of t इक्वल टू x ऑफ t. पुट इन इक्वेशन, सेकेंड वाला इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देना है ये वाला. देन हमारा इक्वेशन बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस नॉट टी एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी. अब हमको पता है ई रेस टू एस नॉट टी एंड ई रेस टू माइनस एस टी इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस नॉट. पुट देन हमारा इक्वेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस एस माइनस एस नॉट टी डी टी. एंड हमको पता है कि ये डेफिनेशन है लैप्लस ट्रांसफॉर्म की. सो दैट्स वाई एक्स ऑफ एस माइनस एस नॉट, हेंस इट इज़ प्रूव्ड गाइज. इट इज़ सिंपल. देन सेकेंड हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. इन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी in time domain it is a convolution and in frequency domain it is a multiplication, means convolution converted into multiplication, like that. Convolution property is x of t convolution h of t equal to capital X of s into capital H of x. Proof: we know that the Laplace transform of we know that the Laplace transform definition x of, let's consider x of t equal to x of t convolution h of t integration minus infinity to infinity x of t convolution h of t into e raised to minus st dt. It is our first equation. We know that x of t convolution h of t equal to integration minus infinity to infinity x of tau h of t minus tau into t tau. Put equation 2 into equation 1. Our equation like that, integration of x of t convolution h of t equal to integration of minus infinity to infinity integration of minus infinity to infinity x of tau h of t minus tau into e raised to minus s t dt. अब हम दो इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं, एक टाउ का एक टी का. इंटीग्रेशन ऑफ एक minus infinity to infinity x of tau d tau and integration of minus infinity to infinity h of t minus tau e raised to minus s t dt. In second integration put t minus tau equal to lambda, t equal to t plus lambda. When the t infinity to minus infinity, like that, lambda equal to minus infinity to infinity and dt equal to d lambda. Put in equation 3. Now our equation becomes minus integration of minus infinity to infinity x of tau into d tau into integration minus infinity to infinity h of tau into e raised to minus s lambda plus tau d tau. अब हम ये दोनों टर्म सेपरेट कर देंगे, e raised to minus s lambda plus tau. Then our equation becomes integration of minus infinity to infinity x of tau d tau into integration minus infinity to infinity h of lambda minus e raised to minus s into lambda into e raised to minus s into tau d lambda. Then अब हम ये जो डबल डैश वाली लाइन ये है ना ई रेस टू माइनस एस टाउ, वो उधर शिफ्ट कर देंगे. मीन्स दो इंटीग्रेशन सेपरेटली डिफरेंट
हो गए. इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई रेस टू माइनस एस टाउ डी टाउ इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ लैम्बडा इंटू ई रेस टू माइनस एस लैम्बडा डी लैम्बडा. देखिए अब हमने दो इंटीग्रेशन सेपरेट बना लिए है, एक टाउ का एक लैम्बडा का. ये सिमिलर है लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की तरह. फर्स्ट इंटीग्रेशन इज एक्स ऑफ यस, सेकेंड इंटीग्रेशन इज एक्स ऑफ h of s. Hence our convolution property is proved. Convolution is converted into multiplication. Then another property is differentiation in s domain. If in time domain signal is multiplied by the minus t, then the frequency domain there is a differentiation. Our differentiation in s domain is d by ds capital X of s equal to integration of minus t x of t. Proof: x of s equal to integration of minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt. It is a definition of Laplace transform. Of course you know that this definition is differentiate with respect to s. Then our equation becomes d by ds capital X of s equal to d by ds of integration of minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt. d by ds x of s equal to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी बाई डी एस ई रेस टू माइनस एस टी डी टी. अब हमने ये डिफ्रेंशिएट वाली टर्म है वो अंदर कर दी है. ई रेस टू माइनस एस टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यस. डी बाई डी एस एक्स ऑफ एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी. डी बाई डी एस ई रेस टू माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन आता है ई रेस टू माइनस एस टी इंटू माइनस टी डी टी. माइनस टी इज कॉन्स्टेंट सो इट इज़ आउटसाइड द इंटीग्रेशन. माइनस टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी डी बाई डी एस एक्स ऑफ एस इक्वल टू integration of minus t x of t. And last property is integration in s domain. A statement: if in the time domain signal is divided by the t, then in s domain there is a integration. To prove integration property is integration of minus infinity to infinity capital X of s ds equal to integration of Laplace transform of x of t by t. Integration with respect to s. Integration with respect to our Laplace transform definition is integrate with respect to s. Then it is become integration of s to infinity x of s ds equal to integration of minus infinity to infinity x of t and integration of x s to infinity e raised to minus st dt. Then integration of minus infinity to infinity x of t e raised to minus st upon t. It is a integration of s to infinity e raised to minus st. Integration is e raised to minus st by t. It's s infinity ds. Then integration of minus infinity to infinity x of t, it become e raised to minus infinity upon minus t minus e raised to minus st upon minus t dt. Then in integration of minus infinity to infinity x of t upon minus t and minus e raised to minus st dt. Here e raised to minus infinity equal to 0, so that's why our equation become like that. Integration minus infinity to infinity x of t upon t e raised to minus st dt. This t is from this equation we know that this is a definition of Laplace transform. We write as a L x of t upon t. Laplace transform L x of t upon t. Hence our integration property is proved. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल u ऑफ t माइनस यू ऑफ t माइनस 3. फाइंड द लैप्लस. क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस यू ऑफ t माइनस 3. लेट first write down here Laplace transform definition. X of t equal to integration of minus infinity to infinity x of t e raised to minus st dt. फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे x of t equal to u of t minus u of t minus 3. फर्स्ट u of t is a unit signal.
means it is amplitude is always 1 and it is always positive. So u of t graph is like that, amplitude is 1 and it is always goes to positive side. Then u of t minus 3 means it is shifted. T minus 3 minus means it is shifted by positive side. If it is u of t plus 3, then it is shifted by minus side because of it is alternating of sign. Here u of t minus 3, then it is shifted by 3, 0 1 2 3. So it is start from 0. U of t is start from 0 to positive side, means infinity side, and u of t minus 3 is start from 3 because it is shifted by 3, it is goes to infinity. Then we need to subtraction of u of t minus u of t minus 3, then 1 minus 0 minus 0 0, then here 1 minus 3, here 1 minus 1 minus, here हे बघा, see that 1 1 amplitude is 1, then here 1 minus 1 is 0. 0 to 3 is no problem because after 3 u of t amplitude is 1 and u of t minus 3 amplitude is 1. 1 minus 1 is always 0. After 3 it is 0 only, we got it 0 to 3, so that's why integration limit is 0 to 3. Then our equation becomes Laplace transform of u of t minus u of t minus 3 is equal to integration of minus infinity to infinity u of t minus u of t minus 3 e raised to minus st dt. Then integration is 0 to 3 e raised to minus st dt. Then we are solving this e raised to minus st by minus s 0 to 3 equal to e raised to minus 3s upon minus s plus e raised to 0 upon s. E raised to 0 is 1. यस जो है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाई यस 1 माइनस ई रेज टू माइनस 3s. आंसर इज 1 1 अपॉन एस 1 माइनस 3 ई रेज टू माइनस 3s. सेकेंड एग्जाम्पल e रेज टू माइनस 2 t minus 1 u of t minus 1. We know that the e raised to minus at u of t Laplace transform is 1 upon s plus a. Let x of t equal to e raised to minus 2t u of t. E raised to minus 2t u of t equal to 1 upon s plus 2, and using time shifting property x of t minus alpha, Laplace transform e raised to minus s alpha x of s. Using given equation alpha equal to 1. See that in given equation e raised to minus 2 t minus 1, t minus 1 means it is shifting, it is shifted by 1 पॉझिटिव्ह 1 म्हणजे प्लस 1 पॉझिटिव्ह साईड 1 टू इन्फिनिटी. सो दॅट्स वाय हिअर अल्फा इक्वल टू 1. एक्स ऑफ टी मायनस 1 ई रेज टू मायनस यस into capital X of s. So our answer is integration of Laplace transform of e raised to minus 2 t minus 1 into u of t minus 1 equal to e raised to minus s 1 by s. Thank you guys. If any question, if you have any question, ask in comment. प्लीज़ आपको जो भी वीडियो चाहिए होगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं ट्राई करूँगी इट इज़ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए. सो गाइस, कमेंट शेयर लाइक करना मत भूलिए. थैंक यू.